हाय एवरीवन, दिस इज सौम्यजीत दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑन गोइंग टॉपिक के बारे में। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस ऑल यू वांट टू नो अबाउट लेऑफ्स। आई डिस्कस व्हाट लेऑफ्स आर, कंपनीज क्यों ले ऑफ करती है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स against layoffs, or is there anything that we can do to safeguard against layoffs, and what should be the way forward right now। ये सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन है इन जनरल पूरे ही इंडस्ट्री में, with all of these companies starting to do layoffs and hiring freeze। for example, Microsoft, Twitter, Facebook, Salesforce जैसे कई सारे और बड़े बड़े कंपनीज ने या तो बोल दिया है या फिर ले ऑफ करना शुरू कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बाकी जो सारी कंपनीज है, अधिकतर कंपनीज में हायरिंग फ्रीज चल रही है। इसका ये मतलब है कि अगर आप ले ऑफ भी हो जाते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टेक्निकली कम हो जाते हैं। हाउएवर, आई हैव डेफिनेटली कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट यू कैन अप्लाई राइट नाउ बिकॉज दे आर हायरिंग लाइक क्रेजी। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो यू कैन गो टू द कार्ट अबव, और आई विल लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जाके वो वीडियो देखिए और अप्लाई कीजिए अगर आपको जरूरत है। लेकिन शुरू करने से पहले आई मस्ट से द like target of this video is 1.5 thousand likes, and I can guarantee you that you will definitely learn quite a bit from this particular video as well. So go ahead and smash the like button, subscribe to the channel if you have not already, hit the notification bell, and share this video among your friends and peers. Now, without further ado, let's get started. अब क्या हम ले ऑफ से बच सकते हैं इन दिस करंट इकोनॉमी? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ले ऑफ्स होते क्या है। लाइक व्हाट आर ले ऑफ्स एंड व्हाई डू कंपनी इन्वॉल्व इन ले ऑफ्स? तो जनरली व्हाट हैपेंस इज एज एंड व्हेन द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मार्केट डिक्रीजेस, कंपनी की जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज हो जाते हैं? इसलिए डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज विच आर कस्टमर फेसिंग कंपनीज, जो कि कस्टमर के स्पेंडिंग पे चलते हैं, अगर कस्टमर कम स्पेंड करने लग जाए तो जाहिर सी बात है उनसे जो रेवेन्यू अर्न करेगी ये कंपनी वो भी रिलेटिवली कम होगा। So as soon as the revenue that a company is earning decreases, what essentially happens? Losses starts to coming up in a company. Now each and every company is largely built up of many big investors who have invested early on in this company. कोई भी स्टार्टअप आप देख लीजिए, कोई भी established company देख लीजिए, more often than not उसके कुछ board of directors होंगे और उसके साथ साथ कुछ investors भी होंगे जिन्होंने भारी मात्रा में उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अभी अगर एक कंपनी sees a tremendous decrease in its revenue and increase in its cost, it directly correlates to an increase in losses for all of these big investors. So as soon as that happens, the pressure starts mounting up on the company to do or take certain actions so that the company can turn profitable. Generally, जब ऐसा होता है, then there are largely two things that a company can do. A, the company invests more into hiring more people who will then in turn build more products which can then bring in more revenue, much more than what the cost of the product as well as the people are. And the second thing is take some actions that will correspondingly decrease the expenditure of the company. जितना कंपनी खर्चा करती है अगर हम उसको कम कर दे, क्योंकि रेवेन्यू तो चलो सेम है, अगर हमने जो कंपनी खर्चा कर रही है उसको कम कर दिया तो ओवरऑल जो सेविंग्स है, ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कंपनी दोनों में से कोई एक चीज करती है। अभी हमेशा पहली चीज जो है कि हायर और ज्यादा करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड समटाइम्स यू हैव टू टेक सम और सर्टेन ड्रास्टिक एक्शंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट। एंड इन्हीं सब केसेस में व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स टेकिंग अप ऑप्शन 2, दे डू लेऑफ्स। तो लेऑफ्स का किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के परफॉर्मेंस से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। देयर इज नो रिलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ लेऑफ्स। तो अगर कोई ये बोलता है कि लेऑफ्स आ रहे हैं और मन लगा के हार्ड वर्क करो तो लेऑफ्स नहीं होंगे तुम्हारे और तुमको लेऑफ नहीं किया जाएगा, तो ये सच नहीं है काफी हद तक। अब to reduce this expense, to reduce the operating cost, generally companies क्या करती है? Companies start auditing different products that a particular company owns and sees कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने में कितना खर्चा लग रहा है, कितने लोग उस प्रोडक्ट के लिए एम्प्लॉयड है, एंड करस्पॉन्डिंगली उससे कुछ रेवेन्यू आ रही है या नहीं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट
It understands which are the loss making products and which are the profit making products. And जैसा कि आपको पता है, company then decides to cut off the loss making products in order to reduce the net loss of the company and correspondingly increase the profit margins. तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया अभी तो आपका ले ऑफ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है. Layoffs are purely a business decision and has no correlation for most use cases to your performance or to your company loyalty. अगर आप ज़्यादा देर एक कंपनी में टिक के रहे तो आपका ले ऑफ नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. अगर आप किसी क्रिटिकल फीचर में काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, बट वो प्रोजेक्ट ओवरऑल एक लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ले ऑफ ना करें. फिर आपका ये क्वेश्चन होगा, तो आखिर इस ले ऑफ से हम बच कैसे सकते हैं? इज देयर अ वे टू डू सो? To answer this question, right, to be honest, in this current situation where the competition per se is so cutthroat, as well as the companies right now are looking into maximizing as much profit as possible in this current economic situation, it is extremely difficult if your company decides to do away with a particular team, do away with a particular product, and if you are working in that particular team or if you are working in that particular product, you will be saved. It's extremely difficult. Definitely, if you do work hard, if you make yourself indispensable for the company, for the team per se, you still might have a chance, but that is extremely rare and almost not possible. Whenever we are working in any company, we should always understand that these kind of situations can arise, and as a result of which, whenever you are working, try to understand what different kinds of teams are present in a particular company, which teams or which products those teams work for are profit generating, which products or which teams that or which teams work cannot be neglected, and try to switch to those teams, try to work for those teams, because most of the profit generating teams will be left untouched. डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा गट रेंचिंग एंड एक्सट्रीमली अनफेयर सिनेरियो है विच इज राइट नाउ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, दैट विच एवर टीम यू एंड अप इन, which you might not have entire context or control of, might eventually lead to you being laid off without any mistake of your own, is very unfair and sad, but this is the current state of reality and I am here to give you the true picture. Apart from that, no doubt in saying कि work hard, because that is absolutely important, and it's not like you should start working hard right now. In general, working hard is absolutely important, because by working hard you will learn more things. As soon as you learn more things, you make yourself more and more capable as well as indispensable for the team. उसके अलावा एक चीज जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ हर एक बंदे को करने के लिए, वो है कि do not stop practicing lead code, do not stop practicing low level design, high level design for that matter, because these are some of those core things that will be asked in any interview that you give, be it before layoffs, be it after layoffs, anytime for that matter. So it is very essential that you keep yourself up to date and practice रेगुलरली. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो डे टू डे जॉब है आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे और अचानक से ऐसा कोई डिसीजन ले लेती है कंपनी आपके टीम को ले ऑफ करने के लिए, देन यू विल fall in a very difficult scenario in that case. Next thing that I always urge everyone to do is network बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपकी नेटवर्क से आपका जो भला हो सकता है वो कहीं और से नहीं होगा. And that's why I even say that work from office is very important than working from home, क्योंकि एक वर्चुअल सिनेरियो में वो पर्सनल कनेक्शंस बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. So work from office, attend different events, meet with different people and network as much as possible. यहाँ तक कि I personally know one person whom I was able to help by contacting my previous manager in our CZM and scheduling an interview for that person who was laid off. Before to this current scenario, obviously इतने ज़्यादा जॉब ऑप्शंस और जॉब ओपनिंग्स थे कि किसी को नेटवर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. But at this point in time, it is super critical and super important. So do use LinkedIn to its fullest. उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी random आप पोस्ट कीजिए LinkedIn में, obviously. But yes, do use LinkedIn to network with other people, understand their interests, form bonds, as well as form bonds, so that it may help you when the time gets tough. But above all, in this scenario, I know the mental pressure, the anxiety that is piling high in companies, in employees of these companies that are currently doing layoff is beyond imagination.
I have talked with a lot of people who are living through this anxiety, not knowing what the future holds and what will happen. So it is extremely, extremely important for each and every one of us to stay positive. That's why I thought to send out this message to each and every one of you guys that is extremely super critical and super important to not constantly think about negative thoughts, not constantly think about layoffs, and stay positive. Believe in yourself, be prepared, definitely, because things can go wrong. This is life, and life is unfair at times, and we need to accept that fact. And my heart goes out to each and every one of you guys, each and every one of you who is currently going through this exact situation, जहाँ पे माइंड एक प्रेशर कुकर बन गया है इतना सब कुछ सोच के. तो आई वुड अर्ज कि कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. डू नॉट थिंक ऑलवेज ऑफ गेटिंग लेड ऑफ. डू नॉट थिंक ऑलवेज कि क्या होगा क्या नहीं होगा. Keep your head down, focus on your work, polish up your skills as much as possible, learn new things, keep on practicing, and be ready. As simple as that. So I would definitely urge each and every one of you to be strong. पहले भी टेक इंडस्ट्री में रिसेशन आया है, ये पहली बार नहीं है. फाइनेंशियल रिसेशन आया था, उसके पहले .com बबल बर्स्ट हुआ था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सारी चीज़ें पहले भी हो रखी है. डेफिनेटली जिनके साथ हो रहा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट थिंग्स विल गेट बेटर. अभी ये कब तक इम्प्रूव होगा किसी को नहीं पता, कोई भी बता नहीं सकता. आई एम पर्सनली होपिंग कि ये चीज़ इम्प्रूव हो और इट स्टार्ट्स इम्प्रूविंग फ्रॉम Q3 2023. Let's hope for the best. That's all that we can do. And prepare for the worst. And last but not the least, I must urge you guys कि अगर किसी का ले ऑफ होता है तो ये कभी भी मत समझना कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसके कारण ले ऑफ हो रहा है. एंड नेवर 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 लेट गो ऑफ दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ योर्स. क्योंकि कभी कभार मैंने देखा है अगर कोई भी पर्सन ले ऑफ हो जाता है तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी गिर जाता है. डेफिनेटली इट्स नॉट एन इंडिकेटर ऑफ योर परफॉर्मेंस बट एन इंडिकेटर ऑफ योर कंपनीज परफॉर्मेंस. एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग as much as possible and keep on applying. There are still companies who are hiring right now, and I have already made a video for it. I'll make a part 2 of video of that as well as soon as I get good number of companies who are hiring. I'm here for you guys. If you want to connect with me, have a discussion about anything, feel free to do so. All of my social media platforms and handles are in the description below, so go ahead and hit me up. I am here for you guys. I really hope that you like this content. If you did, then smash the like button, subscribe to the channel if you have not already, and hit the notification bell. It will definitely mean a lot. Share this video among your friends and peers. It might serve them as a daily dose of motivation. Comment down below what different kinds of videos you would want me to make. I'll make them as much as possible, as soon as possible. This is Soumyajit bidding goodbye. Das Vidanya.